Before we discuss acid rain, let us study the effects of sulfur compounds and nitrogen oxides. From among major sulfur compounds in the atmosphere, the oxides of sulfur are the most serious pollutants. The other sulfur compounds, carbonyl sulfide, carbon disulfide, and dimethyl sulfide, and sulfates. The chief source of oxides of sulfur are the combustion of coal and petroleum. Thus, most oxides come from thermal power plants and other coal-based plants and smelting complexes. Automobiles also release sulfur dioxide in air. सल्फर यौगिकों में SO2, H2S तथा H2SO4 प्रमुख प्रदूषक हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण SO2 तथा जल वाष्प द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले हम लेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। The major source of sulfur dioxide emission are burning of fossil fuels in thermal power plants, smelting industries, and other processes as manufacture of sulfuric acid and fertilizers. These account for about 75% of the total SO2 emission. Most of the rest 25% emission is from petroleum refineries and automobiles. लगभग 75% SO2 विभिन्न उद्योगों तथा भट्टियों में कोयले एवं पेट्रोलियम पदार्थों के जलने से उत्पन्न होती है। यह गैस प्रारंभ में H2S के रूप में निकलती है जो वायुमंडल में SO2 में परिवर्तित हो जाती है। इसके प्रभाव, यह गैस आँखों तथा श्वसन तंत्र में जलन उत्पन्न करती है। नमी की उपस्थिति में इसके सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाने के कारण चर्म रोग या स्किन डिजीजेज उत्पन्न हो जाती हैं। SO2 की अधिक मात्रा में पौधों में कोशिकाओं का उत्तक-क्षय या नेक्रोसिस होता है जिससे पत्तियां नष्ट हो जाती हैं, क्लोरोफिल विलुप्त होने लगता है, फलस्वरूप हरिमहीनता या क्लोरोसिस रोग उत्पन्न हो जाता है। तरुण पत्तियां पहले पीली तथा बाद में सफ़ेद होकर मर जाती हैं। पत्तियों पर उपरोक्त प्रभावों के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। कुछ पौधे SO2 के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, जैसे ब्रायोफाइट्स एंड लाइकन्स। इन पौधों को इस प्रदूषक का सूचक या इंडिकेटर माना जाता है। SO2 की 50 ppm सांद्रता अनेक पौधों में अत्यधिक हानिकारक प्रभाव डालती है, जैसे कि अल्फा, कपास, सेब इत्यादि। विशेषकर कोयला जलाने वाले कारखानों एवं धातु शोधक कारखानों के पास के क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता पर अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ता है। पौधों में SO2 रंध्रों के माध्यम से प्रवेश करती है तथा उत्तकों में सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फेट के रूप में ऑक्सीकृत हो जाती है। क्षतिकारक प्रभाव के ऑक्सीकारी व अपचयी गुणों के कारण उभरते हैं। SO2 इमारती सामान में मार्बल, स्लेट, लाइमस्टोन के अपरदन के लिए उत्तरदायी होती है। अनेक ऐतिहासिक स्मारकों तथा मूर्तियों पर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से इनकी सुंदरता नष्ट हो जाती है। इसका हम बाद में भी अध्ययन करेंगे। SO2 causes intense irritation to eyes and respiratory tract. It is absorbed in the moist passage of upper respiratory tract, leading to swelling and stimulated mucus secretion. This gas causes damage to higher plants, forming necrotic areas on leaf. Plants are relatively more sensitive to SO2 than the animals and man. In most plants, leaf area collapses under intense exposure to SO2. There is bleaching of leaf pigments, which has an impact on plant productivity. SO2 is also involved in the erosion of building materials such as limestone, marble, the slate used in roofing, mortar, and deterioration of statues. Petroleum refineries, smellers, craft paper mills deteriorate the adjoining historic monuments. Then hydrogen sulfide.
यह रंगहीन सड़े अंडों जैसी दुर्गंध युक्त गैस है। H2S सामान्यतः गंभीर प्रदूषक नहीं है क्योंकि यह गंधक व SO2 में ऑक्सीकृत हो जाती है। H2S की विभिन्न सांद्रता पर सिरदर्द, उल्टी आना, शिथिलता, हृदय अवसाद, मूर्छा तथा मृत्यु भी हो जाती है। 5 ppm सांद्रता पर इसकी दुर्गंध कुछ लोगों की भूख कम कर देती है। इस गैस की 100 ppm सांद्रता कंजक्टिवाइटिस तथा म्यूकस मेम्ब्रेन्स में इरिटेशन के लिए उत्तरदायी है। 15 से 30 मिनट तक 500 ppm सांद्रता पर इस गैस से कॉलिक, डायरिया एंड ब्रोंकियल न्यूमोनिया हो जाते हैं। 700 से 900 ppm पर श्वसन संस्थान अत्यधिक दुष्प्रभाव होने के कारण इस गैस से मृत्यु हो जाती है। H2S गैस की अधिकतम स्वीकार्य सांद्रता 20 ppm है। At a low concentration, H2S causes headache, nausea, collapse, coma, and finally death. Unpleasant odor may destroy the appetite at 5 ppm level in some people. A concentration of 150 ppm may cause conjunctivitis and irritation of mucous membranes. Exposure at 500 ppm for 15 to 30 minutes may cause colic, diarrhea, and bronchial pneumonia. This gas readily passes through alveolar membrane of the lungs and penetrates the bloodstream. Death occurs due to respiratory failures. The MAC for 8 hours a day is 20 ppm. The chief source of H2S are decaying vegetation and animal matter, especially in aquatic habitats. Sulfur springs, volcanic eruptions, coal pits, and sewers also give off this gas. Then coming on to nitrogen oxides. पर्यावरण में NO, N2O and NO2 मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसमें N2O की वायुमंडल में सांद्रता 0.5 ppm तक होती है। यह गैस वायु प्रदूषण समस्या उत्पन्न नहीं करती। लगभग 75% नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स NO के रूप में तथा शेष 5% NO2 के रूप में निकलते हैं। There are present measurable amounts of nitrous oxide, nitric oxide, and nitrogen dioxide. Of these, nitric oxide, NO, is the pivot compound. It is produced by combustion of oxygen and nitrogen during lightning discharges and by bacterial oxidation of ammonia in soil. NO contacts with air and combines with oxygen and even more readily with oxygen to form the more poisonous nitrogen dioxide, NO2. NO2 may react with water vapor in air to form HNO3. This acid combines with ammonia to form ammonium nitrate. Fossil fuel combustion also contributes to oxides of nitrogen. In urban areas, about 46% of oxides of nitrogen in air come from vehicles and 25% from electric generation and rest from other sources. In atmosphere, maximum N2O, nitrous oxide levels are about 0.5 ppm, whereas average global level is estimated to be nearly 0.25 ppm. This gas has so far not been implicated in air pollution problems. Nitric oxide or NO. The chief source of this gas are the industries manufacturing HNO3 and other chemicals and the automobile exhausts. At high temperature, combustion of gasoline produces this gas. A large amount of this is readily converted to more toxic NO2 in the atmosphere by a series of chemical reactions. NO is responsible for several photochemical reactions in the atmosphere, particularly in the formation of several secondary pollutants like PAN, ozone, carbonyl compounds, etc., in the presence of other organic substances. Nitrogen dioxide, NO2. A deep reddish brown,
gas, which is only widely prevalent colored pollutant gas. This gas is the chief constituent of photochemical smog in metropolitan areas. NO2 causes irritation of alveoli, leading to symptoms resembling to emphysema or inflammation upon prolonged exposure to 1 ppm level. Lung inflammation may be followed by edema and final death. NO गैस जीवों में श्वसन तंत्र से संबंधित रोग उत्पन्न करती है। NO व NO2 वायुमंडल में हाइड्रोकार्बन से क्रिया करके अति विषाक्त द्वितीयक प्रदूषकों जैसे कि पैन, ओजोन और कार्बोनिल यौगिक का निर्माण करते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग इन्हीं गैसों की देन है। NO2 फेफड़ों की कूपिकाओं को शुद्ध करती है। लंबे समय तक उच्च सांद्रता पर NO2 वात स्फीति ये एम्फाइसीमा की तरह के लक्षण उत्पन्न करती है। फेफड़ों में सूजन के बाद में जल शोथ या इडीमा होने लगता है और अंत में मृत्यु हो जाती है। चूँकि सिगरेट व सिगार में NO2 होती है, अतः इनका धूम्रपान करने वालों के फेफड़ों में ये रोग अधिक पाए जाते हैं। NO2 पादपों के लिए भी काफ़ी हानिकारक है। यदि पौधों को 0.3 से 0.5 ppm की सांद्रता पर 10 से 20 दिन तक रखा जाए तो पौधों की वृद्धि रुक जाती है। कुछ अधिक संवेदनशील पौधों में पत्तियां नष्ट हो जाती हैं। नाउ कमिंग ऑन टू एसिड रेन। विभिन्न स्रोतों से निकली SO2 तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वायुमंडल में पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से पहले हजारों किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। ये दोनों ऑक्साइड्स वायुमंडल में ऑक्सीकृत होकर गंधक अम्लों व नाइट्रिक अम्लों का निर्माण करते हैं, जो वायुमंडल में उपस्थित जल के साथ घुलकर पृथ्वी पर आते हैं अथवा वायुमंडल में ही कोहरे एवं बादल के रूप में रह जाते हैं। इसे ही अम्लीय वर्षा कहते हैं। We have read that the oxides of sulfur and nitrogen are important gaseous pollutants of air. These oxides are produced mainly by combustion of fossil fuels, smelters, power plants, automobile exhaust, domestic fires, etc. These oxides are swept up into the atmosphere and can travel thousands of kilometers. The longer they stay in the atmosphere, the more likely they are to be oxidized into acids. Sulfuric acids and nitric acid are the two main acids which then dissolve in the water in the atmosphere and fall to the ground as acid rain. Here we can see the formation of acid rain in this figure. Acidification of environment is a man-made phenomenon. The acid rain is in fact a cocktail of sulfuric acid and nitric acid, and the ratio of the two may vary depending upon the relative quantities of oxides of sulfur and nitrogen emitted. On an average, 60 to 70% of the acidity is ascribed to sulfuric acid and 30 to 40 to nitric acid. The acid rain problem has dramatically increased due to industrialization. Burning of fossil fuels for power generation contributes to almost 60 to 70% of the total SO2 emitted globally. Acid rains have assumed global ecological problem because oxides travel a long distance, and during their journey in atmosphere they may undergo physical and chemical transformations to produce more hazardous products. अम्लीय वर्षा अनेक दुष्परिणामों के लिए उत्तरदायी है। अम्लीय वर्षा के कारण मृदा की pH कम हो जाती है तथा मृदा अम्लीय हो जाती है। इससे फसलें व जंगल नष्ट हो रहे हैं। अम्लीय वर्षा से जलीय जीवन भी अत्यधिक प्रभावित होता है। इस वर्षा के कारण स्वीडन, नॉर्वे, न्यूयॉर्क की अनेक झीलें मछलियां रहित हो गई हैं। इन्हें मछलियों का कब्रिस्तान या फिश ग्रेवयार्ड भी कहा जाने लगा है। Acid rains create complex problems and their impacts are far-reaching.
The increased soil acidity thus affecting land flora and fauna and cause acidification of lakes, streams, thus affecting aquatic life. Over 10,000 lakes in Sweden have become acidified. Thousands of lakes in USA, Canada, Norway have become unproductive due to acidity. Fish population has decreased tremendously and the death of salmon and trouts, etc. The fish-less areas or the lakes are now called fish graveyards, as depicted in this picture. The pictures are really terrifying. The acidification affects crop productivity and human health also. इससे फसलें व जंगल नष्ट हो रहे हैं. पश्चिम जर्मनी में लगभग 8% वन नष्ट हो गए हैं और लगभग 18 मिलियन एकड़ में वन अत्यधिक प्रभावित हुए हैं. स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड तथा चेकोस्लोवाकिया में भी अम्लीय वर्षा से वन प्रभावित हुए हैं. Forests in Switzerland, Netherlands, and Czechoslovakia have been damaged by acid rains. Nutrients as calcium, magnesium, potassium have been leached away from the soil by acids. In West Germany, nearly 8% of the forests died and nearly 18 million acres of forests are critically afflicted by acid rains. Acid rains are a great threat to British environment as to Central Europe and South Scandinavia. In 1974, acid rains over Scotland were found to be more sour than vinegar. pH was 2.4, alarming. This H2SO4 shower, 500 times more acidic than rain, should naturally be stood as the world record for 4 years. Most of the falling snow in Britain is now highly acidic. Several rivers have also turned acidic due to the acid rains. Acid rains are carried away by prevailing wind to elsewhere where precipitation takes place. Thus, oxides may be produced at one place and these affect elsewhere by turning into acids. The two such victims are Canada and Sweden. Canada gets acid rains from petrochemical units in North America. Heavy winds pick up acid rains from factories in Britain and France to Sweden. Equally grim are the acid rains in Norway, Denmark, and West Germany. It is said that 90% of the acid rain of Norway and 75% of Sweden are due to drifted acid rain oxides. Acid rains are thus becoming a major political issue. अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक खतरा ब्रिटेन में बना हुआ है. यूरोप के दूसरे देशों के बजाय ब्रिटेन के पर्यावरण में SO2 की मात्रा अधिक होने से वहां गिरने वाली बर्फ अधिक अम्लीय होती है. अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार NO2 तथा SO2 वायु के साथ स्थानांतरित होती हैं, जिससे कि अम्लीय वर्षा किसी भी स्थान में हो सकती है. The acid rain is fast spreading to developing world where tropical soils are even more vulnerable. The acid rains are also causing erosion of the stonework. Here in the figure we can see the British Parliamentary Building and other monuments of Britain are affected by the acid rains. The stones have been corroded. In the lower figure we can see the German sandstone statue.
which was photographed in 1908, and you can see in 1969 the eroded structure, which is the effect of the devastating acid rains. Here you can see the corroding effects of acid rain on marble. The marble surfaces exposed to rain develop a rough, sugary texture because the calcite grains are loosened as the edges dissolve in the rain. The acid rains are fast spreading to a developing world where the tropical soils are even more vulnerable than those of Europe. Acid rain problem is on the ebb in India. Industrial area with a pH of rainwater below or close to the critical value have been recorded in Delhi, Nagpur, Pune, Bombay and Calcutta. Here we can see in the figure Taj Mahal of Agra is suffering from sulfur dioxide, sulfuric acid and other fumes, which are the pollutants which are released from Mathura refinery nearby. On the left side we can see the wonderful Taj Mahal before it was affected by the pollutants, and on the right you can see the yellow grim picture of Taj of today. It is getting deteriorated because of the emissions of Mathura oil refinery, which lies 40 kilometers away. The oil refinery emits 25 to 30 tons of SO2 daily in spite of using low sulfur fuels. According to a study made by BARC, the average pH value of acid rain at Calcutta is 5.8, Hyderabad it is 5.73, in Madras 5.85, Delhi 6.21 and Bombay 4.80. The situation may even worsen in future due to increased installation of thermal power plants by NTPC and consequent increase in coal consumption. According to one estimate, total emission of SO2 in India from fossil fuel burning has increased from 1.38 million tons in 1966 to 3.20 million tons in 1980, a 21% increase as compared to corresponding increase of only 8.4% in USA in the same period. There is urgent need for proper regulator monitoring to provide timely warnings about acidification of our environment. Reduction in automobile emissions cuts down on nitrogen oxides. Emissions trading put into practice to put economic incentive into cleaning industrial activities. Coal burning power plants use flue gas desulfurization requiring a reaction tower that extracts the sulfuric acid by reacting it with lime or limestone slurry and removing the product with scrubbers. In this way, we can put a curb on the effects, devastating effects of acid rain.